graph between EMF and resistance, external resistance R, terminal potential difference V and external resistance R, terminal potential difference V and current I. This is the case R, and this is cell, internal resistance small r. ठीक है, current here is I. R is external resistance, small r is internal resistance, and this is EMF. Now, first graph E and R. EMF of the cell is independent of external resistance R connected across the cell. It means that E and R are simply independent each other. Graph will be this one. ठीक. Now, second one, this was E and R. Second one, V and R. So V equal to E minus I R. ठीक है. And from here what we will get? V equal to E minus V by R into R. I equal to V by R होता है. I equal to V by R. यहाँ से आगे that is E equal to V times 1 plus small r by capital R. यहाँ से मैंने E की वैल्यू निकाल ली, and V equal to E upon 1 plus R by R. ठीक. Now, I have expression V equal to E upon 1 plus small r by capital R. ठीक. Now, first case, when R equal to 0, when R equal to 0, this will be 1 upon 0 infinity, and V equal to E upon infinity, that is V equal to 0. That is, the graph will start from the origin. When R equal to small r, then V equal to E by 2. R की जगह पे स्मॉल r रख दीजिए, ये 1 हो जाएगा, तो V equal to E by 2. Second point we have got. When R tends to infinity, then what will happen? V equal to, V will tends towards E. Just we are going to plot the graph. This is R, this is V. When R equal to 0, V equal to 0, first point. When R and sorry, this is the maximum value E, and when R equal to 2, R equal to small r, V equal to E by 2. This point here, this is the R, and when R tends to infinity, V tends to E. तो इसका ग्राफ जो है वो it will be like this one. ये ग्राफ इसका इस तरीके से बनेगा. ठीक है, ये ग्राफ ऐसे आएगा. ठीक है. Now third one is V and I. V equal to E minus IR.
ठीक है, दैट इज V इक्वल टू माइनस आई आर प्लस E, एंड दिस इज द सेम रिलेशन Y इक्वल टू mx प्लस C. ठीक है, नाउ दिस इज V. ठीक है, आई हैव टू प्लॉट द ग्राफ बिटवीन V and I, and sorry, this is V and this is I, and the graph will be स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होगा. ठीक है, इसको हम ऐसे देख सकते हैं. ओके, व्हेन V इक्वल टू 0, when V equal to 0, then V equal to 0, तो we will get minus IR plus E. तो IR equal to E, R equal to E by I. तो when V equal to 0, और हमें I की वैल्यू चाहिए ना, I equal to E by R. तो when V equal to 0, I equal to E by R. तो this is E by R. Similarly, when I equal to 0, when I equal to 0, substitute I equal to 0, V equal to E. This is E. इसको आप ज्वाइन कर दीजिए, राइट. दिस इज द ग्राफ. ठीक है. Now, one very important point, that when you are charging this cell of EMF E with a charger of potential difference phi, ठीक है, तो इसका प्लस इससे प्लस ऐड करेंगे, इसका माइनस जो है वो इसके माइनस से होगा. ठीक है, एंड ये चार्जर है तो करंट इसमें ऐसे फ्लो करेगा, करंट I विल बी देयर. इन दिस केस पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल विल बी ग्रेटर देन द EMF. क्यों हो जाएगा भाई? क्योंकि इस इन दिस कंडीशन व्हाट इज द नेट पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल? हियर V इज ग्रेटर देन E, तो V माइनस E will be the net potential difference. Now V minus E equal to IR, तो V equal to E plus IR. याद रखिएगा, दिस इज कंडीशन ड्यूरिंग चार्जिंग. जब आप सेल को चार्ज करते हो उस केस में V equal to E plus IR and V is greater than E, and during discharging of the cell, discharge कर रहे हो सेल, during current is drawn from the cell, from cell, उस केस में क्या होगा? V equal to E minus IR. ठीक है, तो इस केस में जो होगा V will be लेस देन E. तो ये कंडीशन याद रखें. चार्जिंग के लिए फार्मूला ये है, डिस्चार्जिंग के लिए ये है. ठीक, बंद कर दो.